मृतक को आई सर की चोट, सख्त और मैथिली पदार्थ से आना संभव है। मेरे मतानुसार मृतक वहां तक तो ठीक है, लेकिन ये PW1 पढ़िएगा। जी रात्रि 11:30 बजे आरोपी का केशव से वातावरण होने लगा था। जी और ये वातावरण क्यों हुआ था? ईंट को गिनने के ऊपर से, वो मुंशी था, ठीक है, और इसने उठाकर मार दिया। नॉलेज थी, इंटेंशन नहीं था। पार्ट 2 में चला जाएगा। 9 साल ऑलरेडी हो गए हैं। मैं और शी केशव सेइंग कि कई लोग वहां पर सो रहे थे जिनके नाम नहीं मालूम। मतलब इट वाज अ लेबर कॉलोनी, ठीक है, ईंट भट्टे पे। इसने ना तो शी रेज, ठीक है, बचाने तो नहीं आएगा कोई अपनी जान के ऊपर खेलकर, ना तो इसने जो है कोई अलार्म रेज किया, और ना मृतक की आवाज, भाई जब फावड़ा मारेगा तो चिल्लाएगा आदमी, जी ना किसी ने सुनकर कोई आया। अब अगर हम उसमें जाएंगे तो कहानी फिर दूसरी तरफ चली जाएगी। ही इज इन कस्टडी सिंस 23/5/16 Laship, 2000, more than 9 years, 1 month Laship, आप बताइए without commission. three submissions, my lord. Firstly, exhibit P7 Fabra has been seized from the हाँ accused. ठीक है, उसको तो डिनाई Secondly, कर, my lord, FSL P31 देख लें, blood has been found in Fabra. वही वो And तो डिनाई नहीं कर रहे हो। 304 में एक्यूटल थोड़ा ना मांग रहे हैं। जी 304 में कन्वर्ट करने का कह रहे हैं। एक्यूटल अगर होता ना, तभी सब बातें आती कि जी। सभी एविडेंस है। I had इज to made एक्सेप्टिंग, हाँ नहीं ठीक है। मैं समझ और तीसरा क्या? ये तो दो Lastly, my lord, PW10, the doctor is clearly saying it is an anti-mortem. PW3 PWC, PW10 भी, my lord. PW10 PM वाले हैं Laship. PM वाले. क्या कहता है वो? This is अभिमत पैरा नंबर 4. मृतक को आई सर की चोट, सख्त और मैथिली पदार्थ से आना संभव है। मेरे मतानुसार मृतक वहां तक तो ठीक है, लेकिन ये PW1 पढ़िएगा। जी रात्रि 11:30 बजे आरोपी का केशव से वातावरण होने लगा था। जी और ये वातावरण क्यों हुआ था? ईंट को गिनने के ऊपर से, वो मुंशी था, ठीक है, और इसने उठाकर मार दिया। नॉलेज थी, इंटेंशन नहीं था। पार्ट 2 में चला जाएगा। 9 साल ऑलरेडी हो गए हैं। in that context I'll just submit one thing. पैरा नंबर 1 वो क्लियरली ये चीज बोल रही है, मतलब मृतक केशव रजक वहीं पर रहते थे, घटना इसी वर्ष सो एंड सो की। केशव रजक ईंट भट्टा की सो एंड सो काम करता था। घटना दिनांक को केशव रजक का ईंट गिरने से विवाद हुआ। नो नो नो, यहाँ नहीं, इसके बाद हाँ ये नेक्स्ट पैरा, मतलब हाँ पलंग पर लेटा था, तभी आरोपी गोविंद ने केशव के सिर पर फावड़ा मारा था। हाँ। आई एम ऑन ये थोड़ा सा इसलिए, अब यहाँ आइएगा। जी हम सब खोलना नहीं चाह रहे थे। जी पैरा 6 पढ़िएगा इसका। इसका कंडक्ट कितना अननेचुरल है। शी मैं सॉ द इंसिडेंट। मैं और शी केशव सेइंग के कि कई लोग वहां पर सो रहे थे जिनके नाम नहीं मालूम। मतलब इट वाज अ लेबर कॉलोनी, ठीक है, ईंट भट्टे पे। इसने ना तो शी रेज, ठीक है, बचाने तो नहीं आएगा कोई अपनी जान के ऊपर खेलकर, ना तो इसने जो है कोई अलार्म रेज किया, और ना मृतक की आवाज, भाई जब फावड़ा मारेगा तो चिल्लाएगा आदमी, जी ना किसी ने सुनकर कोई आया। अब अगर हम उसमें जाएंगे तो कहानी फिर दूसरी तरफ चली जाएगी। even this take has not देखिएगा, been taken. this appeal is taken up for final disposal at motion stage on request of Shri Asim Kumar Dikshit, learned counsel for the appellant. Accordingly, IA 15080/25 is dismissed as withdrawn. Next paragraph. Shri Asim Kumar Dikshit submits that it's a case of single injury, which is corroborated from the evidence of PW1 Rajrani, so-called eyewitness, PW3 Dr. Sandeep Panandi, who had conducted MNC, being posted as medical officer at District Hospital Damoh, and PW10 Dr. Hemraj Singh, who had conducted postmortem, and therefore, in view of the fact that incident took place all of a sudden, as deceased Keshav, who was working as a munshi on a brick kiln, had raised an objection in regard to counting of the bricks when one of the laborers, that is the appellant, had taken out taken a favda in his hand and had hit on the head of Keshav, case of the appellant will fall under third exception to the to section 300
section, fourth exception to section 300 IPC, and therefore it act being done without any intention but with knowledge will fall under section 304 part 2 IPC. Next one. Shri Yash Soni submits that there are three circumstances which stand clear against the appellant, namely seizure of Favda from his possession. Full stop. Thereafter, in FSL report, blood stains were found on the Favda. And thirdly, evidence of Rajrani which suggests that incident took place in two parts. PW10 doctor that the injury is anti-mortem. हाँ, राजधानी वाला हटा देना है PW10 that राजधानी वाला हटा दीजिए that injury was anti-mortem and was sufficient in usual course to cause death. Next bell. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is clear from the evidence of sole eyewitness Srimati Rajrani that Keshav Rajak was residing in the labor colony adjacent to Bricklin. Full stop. In May 2016, at about 11:30 p.m., there was a dispute in regard to counting of the bricks. Full stop. Since Keshav, deceased, had raised an objection as to the counting of the bricks, appellant Govind had taken a pavda and hit on his head. Full stop. This fact is corroborated by evidence of Dr. Sandeep Parandi, PW3, who found one lacerated wound on right parietal area measuring 2 inch into 1/4 inch bone deep with hematoma, and also a lacerated wound on right ear measuring 3/4 inch into 1/8 inch, resulting in blood loss from both the ears. Full stop. Thus, it is evident that it was a single blow during the single blow given by Govind as a result of altercation between Govind and deceased on account of counting of the bricks, and thus it is evident that the incident having taken place in the heat of the moment, as is admitted by PW1 Rajrani, will fall under fourth exception to section 300 IPC, and therefore we convert the conviction of the appellant from one under section 302 IPC to 304 part 2 IPC and direct and reduce his sentence to the period already undergone, jail sentence to the period already undergone, in as much as it is reported that he is continuously in jail with effect from 23/5/2016. 23/5/2016, that is, has sustained incarceration for over 9 years. In, fine amount fine amount shall remain intact. Fine amount of rupees 5,000 imposed by Learned Trial Court shall remain intact. In above terms, appeal is disposed of.